हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. Yes, brother. Today we are going to start our class 12 subject maths topic. Our favorite topic, vector, which is belongs to our 10th chapter of our NCERT book. We discuss about some important questions of chapter 10th. Okay. So, one of the most important question of chapter 10 is if vector A plus vector B in this bracket, first bracket, dot product with vector A minus vector B in second bracket, it is dot product of two values is equal to 8. And also given that magnitude of A vector is 8 times of magnitude of B vector, then we will find magnitude of A and magnitude of B. Is that clear, madam? Yes. For that solution, we are taking given conditions like dot product of these two quantities A plus B and A minus B is equal to 8 and this one. So, if we use dot product between these values, like A dot A, first vector, dot product with first vector, A dot A. First vector dot product with second vector means A dot B. Similarly, B dot A and B dot B. पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपन जो है नॉर्मली जैसे यूज लेते हैं वैसे यूज ले लेंगे. एंड आफ्टर दैट वी ऑल नो दैट A dot B is a scalar quantity. So A dot B is always equal to B dot A. A dot B कैलकुलेट करो या B dot A कैलकुलेट करो, यहां डायरेक्शन का कोई डिफरेंस नहीं आता, तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव का कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो A dot B इज ऑलवेज इक्वल टू B dot A. एंड इफ वी यूज A dot A मींस किसी भी वेक्टर को हम लोग उसी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन वी विल गेट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर. ओके. So, we use these two conditions at here and here. So, A dot A is equal to magnitude of A whole square and B dot B is equal to square of magnitude of B, and it is A dot B negative and B dot A positive. So, these cancel to each other. Okay then beta. So, we have this condition, and as we know the value of magnitude of A, from here we put magnitude of A is equal to 8 times of magnitude of B here, then we get 64. जो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 64 स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड B माइनस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड B इज इक्वल टू 8. सिंपल सा माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी. अब जो ये B की वैल्यू आई है, अगर हम लोग इसको यहां पुट करते हैं, देन वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ A लाइक दिस. इज दैट क्लियर बेटा? ओके. नाउ आई एम टेकिंग अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज इफ a given vector A like 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and another vector B like minus I cap plus 2j cap plus k cap and third vector C like 3i cap plus j cap, and given that vector C is perpendicular to vector A plus lambda B vector, then we want to find the value of lambda. सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा जो है अपने को लर्न रखना है. ओके. अब देखिए बेटा, this vector and C vector are perpendicular to each other.
So as we know, if two vectors are perpendicular or orthogonal to each other, then dot product of these vectors should be equal to 0. Okay then, so first of all we will find the value of a plus lambda b vector like this, putting the value of a plus lambda, putting the value of b. Then if we will solve that brackets, then we get 2 minus lambda I cap, 2 plus 2 lambda j cap, and 3 plus lambda k cap. And this value is perpendicular to C, then this dot C is to be equal to 0. So putting the value of this and C and use dot product between them means I dot I and J dot C. बेटा यहां K नहीं है, तो हम चाहें तो इसको यहां हम लोग K मेंशन कर सकते हैं, लाइक 0K. ओके, अब देखो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस इट विल बी 0. सो वी कैन से 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू इजीली 8 कैलकुलेट हो जाएगी. इज दैट क्लियर बेटा? ओके देन, नाउ आई एम टेकिंग वन अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 10. आवर क्वेश्चन इज, if a b c are unit vectors such that a plus b plus c is equal to 0, then we want to find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a. Okay, yes ma'am. For solution of this question, as we know, a vector, b vector and c vector are unit vector, means magnitudes of these vectors must be equal to 1, like this. Magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to magnitude of c is equal to 1. बेटा आप इसको सेपरेट भी मेंशन कर सकते थे, लाइक magnitude of a is equal to 1, magnitude of b is equal to 1 and magnitude of c is equal to 1. मैंने इसको combinedly mention किया. Also given that in condition a plus b plus c is equal to 0, we are taking this condition a plus b plus c is equal to 0. As we know, a dot a is equal to magnitude of square of magnitude of a. ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट यूज लेता हूं, लाइक a प्लस b प्लस c डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, इट शुड बी इक्वल टू 0. तो ये इक्वल टू 0 है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 ही होगा. ओके देन, नाउ if we solve the brackets like a dot b, a dot c, b dot a, b dot b, b dot c, and similarly like this. Okay, and as we know, a dot a written as square of magnitude of a. Similarly, b dot b and c dot c like this. And as we know, a dot b is equal to b dot a, b dot c equal to c dot b, and c dot a equal to a dot c. Listen, this and this are equal, this and this also equal, and this and this also equal. तो ये twice हो गया हमारे पास. So I use twice of a dot b plus b dot c plus c dot a, and ये हमारे पास as it is आ गया, square of magnitude of a, square of magnitude of b, square of magnitude of c. इनकी वैल्यूज हमारे को पहले से ही नॉन है. इट इज इक्वल टू 1, सो स्क्वायर ऑफ 1 आल्सो 1, सो 1 plus 1 plus 1 3. इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 2 को इधर डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a dot b, b dot c and c dot a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to -3/2. बेटा ऐसे ही एक एग्जांपल हमारे पास और गिवन है बुक में, सो यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड ट्राई दैट क्वेश्चन which is based on same pattern. Okay, now I am taking another question. Yes बेटा, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन तो सिंपल सा है, बट लैंग्वेज में हम लोग कुछ मिस्टेक कर जाते हैं. यस, आवर क्वेश्चन इज,
in a triangle ABC, given that A, B and C, these are vertices of triangle ABC and these vertices represent in Cartesian form. So first of all we should convert these vertices into vector form like OA, OB and OC. Okay, then we want to find the angle ABC. Do you know about angle ABC? Angle ABC means this angle in triangle ABC. अब देखो ये एंगल हम कैलकुलेट करना है. For that we all know that if we want to find this angle theta, these vectors BA and BC must be co-initial vectors. So we should find vector BA, not AB. जल्दबाजी में गलती से हम लोग AB और BC कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका बिटवीन देम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज रॉन्ग. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? BA एंड BC दोनों वेक्टर्स कोई इनिशियल वेक्टर होने चाहिए. ओके ना बेटा, अगर हमने ये लर्न रख लिया, ये क्वेश्चन सिंपल सा है. ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल I mention these points in vector form like OA, OB, OC. OA means position vector of A, OB means position vector of B and OC means position vector of C. इन सबको मैंने IJ के फॉर्म में मेंशन कर दिया. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we want to calculate or find BA, this direction BA, B2A. So BA is equal to position vector of A minus position vector of B, final point minus initial point. तो हमने कैलकुलेट कर लिया. सेम एज BC कैलकुलेट कर लिया. ओके, OC माइनस OB कैलकुलेट कर दिया. कैलकुलेट हो जाएगा क्या? अब बेटा हमने क्या किया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिए. हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ BA? इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ I component, square of J component and square of K component means 4 plus 4 plus 9. It will be root 17. And similarly, magnitude of BC is equal to in square root 6. Why? 1 square plus 1 square plus 4, 2 square means root 6. Is that clear? Now, if we want to suppose this angle as a theta like this, let angle ABC is equal to theta, then cos theta is equal to BA dot BC upon magnitude of BA into magnitude of BC. वैल्यू कैलकुलेट कर दी, पुट कर दिया, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग. 2 into 1 2, 2 into 1 2 and 3 into 2 6. तो 2 plus 2 plus 6, it will be 10 and in denominator it will be under root, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, so under root 106. cos को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, so angle ABC will be cos inverse 10 upon in square root 106. that is our answer. बेटा ये हमारे पास 10.3 एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनमें हो सकता है आपको डाउट हो. इजीली कैलकुलेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. यस बेटा, सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास हैं. इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. ओके देन बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.